Dear students, well, we have completed our unit that was trigonometry. Now we have second part of the unit, that is separate unit this time, that is some applications of the trigonometry. In our previous chapter, we have studied about trigonometric ratios, and in this chapter, we will be studying about some of the ways in which trigonometry is used in life around us. As we know, trigonometry is one of the most ancient subjects studied by scholars all over the world. As we said in our last chapter, that trigonometry was invented because its need arose in astronomy. Since then, the astronomers have used it, for instance, to calculate distances from the Earth to the planets and stars. And also, we know that trigonometry is used in geography and navigation. Also, we know that knowledge of the trigonometry is used to construct maps, determine the position of an island in relation to longitudes and latitudes. And we also know that trigonometry is used in our surveying instruments. But these applications we are not going to study here. We are going to study here in this chapter heights and distances. That is we are going to, in this chapter, we will see how trigonometry is used for finding heights and distances of various objects without actually measuring them. Without measurement of the heights and distances of the buildings, towers, and these, how I can say, statues, we will be calculating their heights and distances, but without actually calculating them. For this, for heights and distances topic, I have to study some of the important terms. That is line of sight. What does line of sight means? Line of sight means that line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer. जैसे कि मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा हूँ, तो मेरी आंखें और वो ऑब्जेक्ट, उनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. वो स्ट्रेट लाइन लाइन ऑफ साइट कहलाती है. ऐसे इसी तरीके से हमारे पास एक और पॉइंट है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. सिंपल लैंग्वेज में मैं ये बताऊंगा. एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे है कि मैं ज़मीन पे बैठा हूँ, तो ज़मीन पे एक लाइन हम लेंगे, हॉरिजेंटल लाइन. तो मैं ज़मीन पे जब बैठा हूँ, तो अगर ज़मीन हॉरिजेंटल लेवल से ऊपर किसी जगह ऑब्जेक्ट होगा, तो उसकी तरफ मुझे देखना पड़ेगा. तो मेरी आंखें के दरमियान और हॉरिजेंटल लेवल के दरमियान जो एंगल बनेगी, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन. चलो ऐसे देखते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level. That is, जो मैं अभी बोल रहा था, that is the case when we raise our head to look at the object. I will explain this. This is the ground, and this is the observer, means eye, and this is the horizontal level, and this is the line of sight because object is placed at this point, means what I was explaining, object and between eyes, the line is known as the line of sight. And the angle between the horizontal level and the line of sight, that is known as angle of elevation. मतलब ऊपर देखना है. ठीक है. इसी तरीके से एक और है, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन समझो आप, इसका उल्टा, मतलब नीचे देखना है कि मैं किसी पोजीशन पे हूँ, तो मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ. ऑब्जेक्ट नीचे है तो ऑब्जर्वर ऊपर है, तो इसका मतलब है मेरा सर, मुझे सर अपना झुकाना पड़ता है. तो देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the point viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal level. वही जो मैं बोल रहा हूँ, that is the case when we lower our head to look at the point being viewed. देखो यहाँ पे दिस इज द हॉरिजेंटल लेवल एंड दिस इज आई ऑब्जर्वर. मैं किसी, फॉर एग्जाम्पल, किसी खिड़की पे बैठा हूँ या किसी टावर पे बैठा हूँ, तो ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड पे है, किसी वो जगह है, तो ये ग्राउंड है. तो यहाँ पे जो ये एंगल, क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट है, तो हॉरिजेंटल और इस लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बना रही हैं, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. होप you understood both all the three terms.
ठीक है. Now we will be going to, as I say, in this unit, in this chapter, we are going to solve only the heights and distances of the various objects, not all the applications of the trigonometry. So our first question is, that is, a circus artist is climbing a 20-meter long rope. एक सर्कस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ऐसे है, मतलब एक फॉर एग्जाम्पल हम बनाएंगे. मेरे पास एक पोल है समझाने के लिए. वर्टिकल पोल है, हॉरिजेंटल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ये वर्टिकल पोल है, ठीक है. और एक सर्कस आर्टिस्ट यहां से लेके ये रस्सी जो है, रोप जो है, वो टॉप के साथ टाई की हुई है और इसकी लेंथ जो है दैट इज 20 मीटर, ठीक है. एंड एक और पॉइंट बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड. रोप किसके साथ? ग्राउंड के साथ कितनी एंगल बना रहा है? 30 डिग्री. हमें बोला जाता है इस रोप, इस पोल की हाइट कितनी है. सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है. क्योंकि देखो इसका मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है. तो आई विल बी यूजिंग दिस क्वेश्चन लाइक दिस. ये था डायग्राम के हिसाब. मैं सिंपली लूंगा, ये ऐसे लेंगे, ये ऐसे लेंगे और ये ऐसे लेंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा दिस इज ए बी एंड सी and this is 30 degree and this is 20 मीटर. और मुझे ये कैलकुलेट करना है. चलो मैं लिखूंगा h, ठीक है. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझना है. पहले मैं ये लिखूंगा, लेट फॉर एग्जाम्पल BC इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है. वो क्या है? बी दी लेंथ ऑफ रोप, ठीक है. टेंशन तो नहीं है. इसी तरीके से मैं लिखूंगा AC इज इक्वल टू H मीटर, बी हाइट ऑफ पोल, क्योंकि यही कैलकुलेट करना है. एक और चीज जो है दैट इज मैं लिखूंगा ऐसे, एंगल ABC दैट इज 30 डिग्री, ठीक है. दैट इज एंगल, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं एंगल ऑफ एलिवेशन. चलो फिलहाल पहले क्वेश्चन में लिखेंगे एंगल मेड बाय द रोप विद द ground level. Understand? Now question is easy. We have to use it, that trigonometric ratio in which hypotenuse is given and we have to calculate the perpendicular, because this is vertical with the ground, means it makes angle 90 degree with the ground. So we have to calculate that trigonometric ratio in which we are given hypotenuse and we have to calculate the perpendicular. And we know our first trigonometric ratio, that is sine. In sine we know perpendicular divided by hypotenuse, means it is simple. I will using in triangle ABC. ये सेटअप अंडरस्टैंड करना अच्छी तरीके से. I will be using sine of
30 degree because sine theta is equal to perpendicular means AC divided by BC. And we know trigonometric ratio sine 30 is equal to 1 by 2. So I am writing 1 by 2. That is AC. For AC I have H. For BC I have 20. So simplifying, I will be writing H is equal to 20 divided by 2 means 10. So it means that H is equal to 10 meters. Easy question. So height of किसकी height ढूंढनी थी, pole is equal to 10 meters. Easy. Hope you understood it very well. Thanks.